Hello everyone, welcome to APTI PLUS Academy for Civil Services. It's a special video on Fortnight Current Affair, also known as FCA. This is Fortnight 1 for the month of March, right? Every month we have two fortnight. The first fortnight is being released on second Sunday and the second fortnight is being released on fourth Sunday. In this video, I'll be giving you the top 10 important news analysis that was important for the entire fortnight. And the coverage of the news include three important components. The first is the Hindu, the other is the Indian Express, and the PIB. Mostly the news we are discussing is going to be important for prelims as well as for the mains examination. So let's get started with news topic list. What I'll be going to discussing with you. There are 10 important news. You can pause this video. You can read out the entire content. We'll be going through each one of them. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe APTI PLUS Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find the video informative and helpful, do not forget to press the like button. The first news is that PM Gati Shakti to boost public-private partnership, something very important to ensure that the public-private participations in terms of boosting overall economical growth is coming from the government and government is leveraging on that part also. So while addressing the post-budget webinar, Prime Minister has said, and he has urged the state government for a private sector adaptations, जो कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति पोर्टल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अलग अलग किस तरह से डेवलप की जाए इंडिया के अलग अलग जोन्स को उसको लेकर के डिस्कशन की गई है. एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज इंसिस्टेड दैट द प्राइवेट प्लेयर कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. So PM Gati Shakti portal also called for the multimodal projects and infrastructure development so that we can reduce the logistic cost as well. What is PM Gati Shakti plan? So Center has launched this plan, or this is also known as National Master Plan for Multimodal Connectivity. इसकी aim है for a coordination, planning and executions of infrastructure project to bring down the logistic cost that the entity is incurring in the part of the transitions, right? And PM Gati Shakti will also ensure true private partnership, एक public-private partnership incorporate की जाएगी with aims to create the infrastructure development. This is what the main rationale behind the PM Gati Shakti plan or National Master Plan for Multimodal Connectivity, right? So I've told you that the focus would be there on infrastructure planning and the development and utilization at the later stages. Now, the government has announced PM Gati Shakti program under which a portal has to be developed and the portal call for integration of 16 ministries of the government of India, right? Why this implementation is important? Because ये integrate करेगी 16 ministries को जहाँ पे जो planning है उसके executions plan के बारे में reviews, connectivity projects के बारे में पूरी जानकारी एक portal में होगी जो कि integrated होगी with the 16 important ministries. Now, how the things go, what is a master plan, what is a roadmap for the government? So first and foremost, roadways connect capacity जो है, that has to be increased. This is what the government has envisaged in their aim. The other part is the railway transport cargo capacity to be increased to 1600 ton by 2025. This is for the financial year. Renewable capacity to increase to 225 gigawatt by again financial year 25. Around 200 new helicopters or heliports, you can say, water aerodromes which envisaged, right? Transmission network की अगर बात करें, this has to be increased by 4,050, 400, 200 circuit kilometer, right? 4,54,200 circuit kilometer. I just get it wrong. It is 4,54,200 kilometers. And other is 4G connectivity for villages by financial year 2022, around 200 new mega food park would also be established. So this is what government has aimed for. It is important that you know what are government planning in terms of PM Gati Shakti. You can take a screenshot. It would be easy for you to revise during the examination. Now, expenditure की अगर बात की जाए infrastructure में, the Prime Minister has said that the government expenditure on infrastructure has increased threefold to fourfold. Actually, he highlighted that this is fourfold increase from the previous budget. जो पहले बार की बजट थी 2013-14 में, वहाँ से गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस की एलोकेशन दी थी. But at this point of time, in this latest budget, the government has allocated 7.5 lakh crore, which is four times the amount which was allocated for 2013 and 14. Now, this will also lead for the greater investment and job creation in our country. We have seen that
the unemployment rate was higher on the higher side. So उसको लेकर के भी जॉब क्रिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगी इस तरह की प्रोजेक्ट को, जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ भी काम करेगी. Center approved national land monetization corporations. Now, recently, the Union Cabinet has approved the formation of National Land Monetization Corporation. एक wholly owned Government of India company होगी जो कि fast track करेगी monetization of land and non-core asset of the public sector entities. Very important decision by government. और सेंटर ने इसके लिए इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल दी है अराउंड 5,000 crore rupees एंड पेड अप कैपिटल जो है वो है 150 crore rupees के आसपास. In the budget, the union budget, last year finance ministry has announced that they plan to set up special economic zone for this purpose. So SPV बनाई जाएगी. SPV is again important where a lot more incentive is provided by the government. So this would be set up by the SPV. मैंडेट क्या होगी एनएलएमसी की बात करें अगर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की. दिस विल अंडरटेक मोनेटाइजेशन सरप्लस लैंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज होती हैं उनके लिए. Now, this will also have a surplus land assessed monetization of agency funding और टेक्निकल सपोर्ट्स भी जो होंगी खास करके असिस्ट करेंगी प्रोवाइडिंग द टेक्निकल एडवाइस टू दिस रिगार्ड. अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक सेल जो प्राइवेटाइजेशन है स्टेट ओन्ड कंपनीज की, दिस इज आइडियल बिकॉज सेंटर की जो स्ट्रैटेजी इज टू रिड्यूस द बिजनेस प्रेजेंस इन अ बेयर मिनिमम जनरेट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर एसेट क्रिएशन. So the more ideas to have a asset creation part. And NLCM, NLMC is also aims to manage, monetize, surplus the building of assets, and it also call for non-core assets, government owned CPSC and strategic disinvestment because government would be also coming for the disinvestment part in many other PSCs, चाहे वो LICs हो या फिर और भी public sector undertaking हो, उसमें भी disinvestment की government ने बात कही है. So this will speed up the closure process of CPSC and smoothing the strategic disinvestment of the government-owned CPSCs. Now, significance क्या है NLMC की? So this is something which is going to create a substantial revenue monetizations that is underused or under assets जो होंगी. The new corporation will also help to carry out monetization और जो public sectors में जो चीज़ें बंद है या फिर जो उसको aligned strategic scale पे करनी है, that would be the part of NLMC. Now, how more about this part? The National Land Monetization Corporation की अगर बात करें, this is undertaking monetization of surplus land and building assets and CPSC for other government agencies. This will help to generate a substantial revenue by monetization unused and underused assets. Now, the other news that is India first indigenous flying trainer Hansa NG. We'll see what is this. This is next NG stand for next generation. So first of kind indigenous aircraft trainer developed की गई है by CSIR, now National Aerospace Laboratories के द्वारा, and they have also conducted the sea level trial in Puducherry which is necessary because if you get अगर आपको अप्रूवल लेनी है तो DCGA से अप्रूवल मिलती है, उसके लिए पूरी ट्रायल्स कंप्लीट करनी होती है. Now the objective of the sea level trial was to evaluate the handling of the cruise performance, structural performance किस तरह की है और क्या important core performances है. Now, CSIR NL have also aircraft designated to meet the need of flying clubs in India and train aircraft. Now, what is ANSA NG? This is something which is relevant for your prelims examination specifically. So, इसके कुछ important features हैं like composite lightweight frame, glass cockpit, bubble canopy with wide panoramic view and electricity operated flaps, right? ये next generations हैं और most advanced flying trainer अभी तक मानी गई है, which is developed by the Rotax digital control engine. Now, Hansa NG is designed to meet Indian flying club needs, an ideal aircraft for commercial pilot licensing and low cost and low fueling consumptions. तो इंडिया में जो commercial piloting licensing है उसकी costing भी थोड़ी कम हो सकती है इस तरह के फ्लाइट को यूज करने के बाद. You can see the images. This is how it's look like. It's developed by CSIR and National Aeronautical Laboratories. Now, Ministry of Home Affairs moved for hybrid security policy. We'll see what is this model all about. So recently, the Union Home Minister has pitched for hybrid model, which call जिस तरह से CISF है उस तरह की private security agency parallelly create की जानी चाहिए, and the training would be provided to have an efficient guarding mechanism for industrial manufacturing in our country. It is not possible to deploy all CISF, right? CISF के भी recruitment
जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनकी यूटिलाइजेशन डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। उस वजह से एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बात की जा रही है जो कि उसी पैरेलली काम करेगी। Now, what is a CISF and how does it work? It come into existence in 1969, जहाँ पे इनिशियली सिक्योरिटी जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनके पर्पसेस के लिए को बनाई गई थी, इवन प्रोटेक्ट द VIP एज वेल, and it worked on the motto of Karam Yogi to ensure country industrial development of secure private manufacture। एंड जो इंडिया की आने वाले समय में जो हमारी टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने 2.5 ट्रिलियन तक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी करने की बात कही है। एंड CIFS इज करेंटली सिक्योरिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन कंट्रीज, जितने स्पेस एस्टैब्लिशमेंट है, एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, और जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ सारे जगह पे CISF की सिक्योरिटी लगाई जाती है। Now, demand for private security. This is the reason being the Ministry of Home Affairs has come up with a proposal where it called for the private people, a private, no, basically a parallel creating a box where these people would also be coming for the security. The work for private security agency is rapidly increasing. This call for rule regulations and their functioning. Government ने aim किया है to enhance the efficacy and efficiency of the CISF, and this alone cannot be done बिकॉज जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं इंडिया यूनिट में वो बढ़ रही हैं। उसके लिए सिक्योरिटी के लिए भी हमें एक पैरेलल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड दे वुड बी ट्रेन ओनली बाय द CISF पर्सनल एज वेल। Now, roadmap for the 5G auction, something very important in the next era of technology because 5G will be very soon launched in India. Now, the Prime Minister has said in a webinar that Union budget has allocated specifically for science and technology, जहाँ पे Union budget ने clear roadmap भी दी है 5G spectrum को लेकर के, and the scheme have proposed that design-led manufacturing related to 5G ecosystem in our country. क्या क्या एम्फोसिस दी गई है, सनसाइन सेक्टर बताई गई है। बजट में सनसाइन सेक्टर के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट किया गया दैट इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल सिस्टम, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड 5G। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सनसाइन सेक्टर। आपको पता होना चाहिए सनसाइन सेक्टर किसे कहते हैं। And the budget has laid a clear roadmap for 5G auction as well, right? जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, उसको भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, और भी ऐसे कुछ 12 सेक्टर्स हैं फॉर विच गवर्नमेंट हैज प्रपोज द PLI, राइट? बट स्पेसिफिकली जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है, एक 5G स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी PI गवर्नमेंट देगी। Now, he has also asked, the Prime Minister has asked the private sector to increase the investment and efforts in this area. Now, use of geospatial data, something very relevant in this context. So, the Prime Minister said, जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके इस एडवांटेज को यूज कर सकेंगे, वेयर द डेटा कैन बी हैव infinite opportunities and emerged to have a huge reform in our country. And he also emphasized that there's a need for important robust data security framework जहाँ पे important gathers की जाएगी data को, and even the standard norms has to be there, right? So gathering of important roadmap जो NHAI है उसने भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत की है, NAHI National Highway Authority of India, they have also done, and many other companies would also be taking the benefit out of, right? तो you have to ensure कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टेक्नोलॉजी यूजेस में, तो आप जियो स्पेशल डेटा के बारे में भी एक हाईलाइट पॉइंट दे सकते हैं। नॉट फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स, the Ministry of Defense has recently offered the 4 project that is related to Indian Army, Indian Air Force, private sector, design and the development. The 4 project of Indian industries and design implementation come under Make 1 category. 2 category होती है, एक Make 1 और Make 2 categories में Defense Acquisition Procedure 2020 जो है उसके अंदर की जाएगी। First we'll discuss Make 1, then we'll go by Make 2. So the industry will provide financial support to prototype and development of these projects. Now, list of projects की अगर बात करें how this project is going to work, so कुछ important areas highlight की गई हैं जिनको in principle approval दी गई है। This include Indian Air Force communication equipped with national security protocols जहाँ पे routers, switches, encryptors, VoIP phones जो security purpose के लिए use किए जाते हैं emergency lines के लिए, and other software with the part of Indian Air Force. For more other part, Indian Air Force में एयरबोर्न इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पॉड्स और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम होंगी। उसके अलावा एयरबोर्न स्टॉर्म ऑफ जैमर्स would also be used, and Indian Army will have Indian light tanks.
Now for make to procedures, what government is coming up with, यहाँ पे भी in principle approval दी गई है. Air Force के लिए full motion stimulator and Apache helicopters, full motion stimulator and Chinook helicopters, again wearable robotics equipments and aircraft maintenance. और इंडियन आर्मी के लिए इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड फोर्सेस एंड ऑटोमेशन कॉम्बैट व्हीकल्स. So this is how government is aiming to move ahead with the make one and make two processes and procedures. Now under make two, the category involve prototype, जहाँ prototype develop की जाती है, एक system बनाई जाती है, platform to upgrade assemblies, component and other part, जहाँ पे innovation solutions को ज़्यादा से ज़्यादा incorporate किया जाता है, and government funding is provided for the prototype development and the purposes. So this is again an important point. Now insurance of Kandakulam plant with the global participation. न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है एनआईए इसको कहते हैं, दे विल कंप्लीट द प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कवर ऑफ दिस three of the four area of Kundakulam power plant, which is in Tamil Nadu. This is the sum assured of over 43,000 crore rupees, right? And this cover likely to be executed with the participation of major global reinsurers. प्रॉपर्टी कवर्स किस तरह से की जाएगी, जो एनआईए है वो किस तरह से काम करेगी. सो दे प्रोवाइड द प्रॉपर्टी कवर टू टू ऑफ द थ्री यूनिट्स, दैट इज अ स्टेट ओन्ड बाय जीआईसीआरई. और ये ऑलरेडी इसके लिए पहले न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने इसकी मैंडेट ली थी, बट अब जो एनआईए आई है वो इस चीज़ की बिडिंग करेगी और फाइनली दे वुड बी कमिंग अप द फाइनल प्रपोजल, राइट. सो जीआईसीआरई विथ ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन इंश्योरिंग फर्स्ट टू ऑफ द KNP which only have a mandatory of 5% obligatory, right? So currently we are having a discussion on that part, and it is being ensured that NIA would be further taking the other part of the insurance as well. As per the government regulation, जो GIC है that refuse fully or partly, जहाँ पे री इंश्योरेंस ब्रांचेस जो इंडिया में वो ऑपरेट करेंगे, कोई फॉरेन ब्रांचेस में अगर भी इनके हैं तो वो उसके साथ भी कोलैबोरेट की जाएंगी, राइट. एंड इन इंडिया दे वुड बी ऑपरेटिंग फ्रॉम द गिफ्ट सिटी, एंड इंश्योरेंस कवर फॉर द न्यूक्लियर प्लांट इज प्योरली अ री इंश्योरेंस ड्रिवन, राइट. लाइक एविएशन इंश्योरेंस होती है उस तरह से और भी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है जिनकी वैल्यू 90% ऑफ हाई वैल्यू पे है, ओवर सम एश्योर्ड एंड मोर देन द ग्लोबल इंश्योरेंस, राइट. सो फॉर दिस एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड लाइक किस तरह से एनआईए फंक्शंस करती है और किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है. विल मूविंग टू द अदर पार्ट ऑफ द न्यूज, दैट इज रेगुलेशन ऑन जंक फूड एड्स ड्यूरिंग द टीवी शो. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज सजेस्टेड कि जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है वो टीवी शोज के दौरान जो बच्चों के प्रोग्राम्स होती हैं उनमें जंक फूड के एड्स को अब अलाउ नहीं करेंगे. सो देयर वुड बी रेगुलेशन, दीज एंटिटी वुड नॉट बी अलाउड टू शो और फोरकास्ट एनी फूड विच इज अ जंक फूड during a child show. So the idea was to brought during a recent meeting where the guideline for misleading advertisement was discussed. So this advertisement was considered as a misleading advertisement. The meeting was attended by the official of several ministries, the Ministry of Home Affairs, Health, Information and Broadcasting and Consumer Affairs. Now guideline किस तरह से काम करेगी, क्या क्या चीज़ों की ऐड करने की ज़रूरत है. So the official has also observed to promote a carbonated beverages which celebrities shows as a dangerous stunt. इस तरह के चीज़ों को जो हाई कार्बोनेटेड फूड्स हैं उन्हें बैन करने की ज़रूरत है. एंड इवन जो DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर के बातें कही जाती है कि ब्रेन के डेवलपमेंट में काम करती है, ऐसे किसी तरह भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा. Now ad does not show unhealthy junk food which leads to obesity in children, and the Consumer Affairs Department has expected to release the guideline जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंगली होंगी. Now what is कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? यहाँ पे जो मिसलीडिंग एक्ट्स है उसको लेकर के एक प्रोविजंस है. सेक्शन 10A के अंदर ये बातें कही गई है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है. ऐसे जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग है उस पर गवर्नमेंट कंक्रीट एक्शंस ले सकती है, रूल्स और लॉ बना सकती है. सो दिस इज अगेन रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पेनाल्टी फॉर हैविंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट which may extend up to 10 lakh, और उस पर्टिकुलर जो एंडोसर्स है उसको पूरी तरह से भी प्रोहिबिट बैन भी किया जा सकता है. सो एंड इवन द प्रोडक्ट कैन बी बैंडेड फॉर 3 years एज वेल, राइट. सो दिस इज हाउ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गो अबाउट. Now India to advance keeper with Bangladesh, something very relevant in terms of developing a healthy relationship with our neighborhood. So the center has decided that the government want to move forward with the comprehensive economic partnership agreement, जहाँ पे एक बड़ी cooperations की बात की गई है in the defense and pharmaceutical from India and Bangladesh, right? For financial year 2021 जो trade balance की अगर बात करें, which was not that great, even it was just mounted for 3.3%,
and export for this was 9.7 billion, right? And import was around 0.3%, which is valued at 1.3 billion dollars. Now, stimulus देने की बात की गई है defense productions को. So, the government of India has said that it need to give more impetus to the productions of defense equipment, something very relevant because Bangladesh is also a country which would be dependent on that part as well. So, यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जो defense equipment के productions है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बढ़े. And the defense cooperation has not progressed through which has offered a $500 million line of credit as well. So this line of credit is again something essentially important for a country like Bangladesh. Now 2019 में भी India has announced 500 million line of credit जहाँ पे बांग्लादेश की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको लेकर के लाइन ऑफ क्रेडिट पहले भी दी हुई है. सो इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद श्रीलंका जहाँ पे this is Bangladesh is trying to build a relationship with Bangladesh where they're trying to come up with defense and other manufacturing part as well. Now, boosting pharmaceutical capabilities, India और Bangladesh जो है एक joint development करेगी program where the medicine has to become they aim to have pharmacy of the world, right? एक pharmacy capital बनाने की बात की गई है इंडिया और बांग्लादेश के joint collaborative efforts के साथ. And this also need to build an uninterrupted resilient supply chain where it will call for investment in many other sectors which include textile, jute products, leather, footwear and other focused industries, right? And the minister also added that 8 billion extended to Bangladesh was also given line of credit. This is for 3 line of credit और ये अभी तक की सबसे बड़ी कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट है जो इंडिया ने किसी कंट्रीज को दी है. सो India has not provided such huge amount to any country. And talking about Bangladesh, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है टेक्सटाइल में वो काफ़ी अच्छी है. They have improved a lot. Many international brand has come there, right? Even if you call by the signature brand that is operating in many global country as well, तो वहाँ पे भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जा रही है. Companies are investing on the part of that textile. So Bangladesh is generating a lot more company and they are also getting investment there also, right? तो लाइन ऑफ क्रेडिट के हिसाब से इंडिया ने 3 लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी दी हुई है. Now, WinCov-19, the first indigenous COVID-19 drug, which is being developed by India. According to the Tata Institute of Genetics and Society, India की जो first indigenous drug है WinCov-19 is likely to be made available to the public soon. And drug has undergone clinical trial which shows excellent result for time being, right? तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स है किसी भी वैक्सीन को कंप्लीट करने के लिए 3 ट्रायल्स किए जाते हैं एंड दैट ट्रायल शोज द रिजल्ट्स. उसके बाद उसकी एफिकेसी रेट देखी जाती है एंड देन दिस इज फाइनली बीइंग अप्रूव्ड. सो व्हाट इज WinCov-19? ये एक प्रोडक्ट है जो कोलैबोरेटिव एफर्ट से डेवलप की गई है बाय CSIR एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सिटी बेस्ड VINS बायोप्रोडक्ट्स. Now, WinCov-19 is a collection of antibiotics from horse and they get injected into the inactivated coronavirus. So this is how it has actually been developed. और antibodies generations की बात करें through the blood serum, which synthesize and purify into drug which would be injected to humans, neutralizing the COVID-19 viruses, right? Now, pandemic lessons हमें लेने की ज़रूरत है because we have seen in the entire decade, coronavirus pandemic has resulted a lot more human life, economic repercussion, and high rate of unemployment in our country. So, in a very short span of time, Center for Molecular Biology has come up with a scientific instrument that rose the challenges developing of diagnostic kits, testing facilities, device genomics, and more than 170 potential drug that is a reagent which would be making wonder. We have seen that the starting of the pandemic we were having the shortage of PPE kits. यहाँ पर जो सैनिटाइजर्स थे या फिर जो मास्क थे उनकी भी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं थी, राइट? बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सम PPE किट्स. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस बढ़ी हैं. तो ये लेसन्स हमें लेने की ज़रूरत है जहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी डेवलप की जाए एंड इवन ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्लान दैट इज रिक्वायर्ड शुड बी देयर. सो पेंडेमिक हैज शोन दैट द country to become self-reliant in healthcare. Although government ने इस चीज़ पे अपनी priority जाहिर की है, but we need a more efforts both from the state as well as from the central government. So this was all about the FCA for the month of March, and this was FCA1. We have a lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis, IAS Gazetted monthly magazine which you can download from our website, FCA, PIB, and MPR, and the gist of Yojana and Kurukshetra which is being released every month.
So you can watch all this video which is there in our playlist section as well. To subscribe to our channel. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.